वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे मेरे ब्रांड का लोगो। नेम इज़ आर्ट बाय विद्या। मेरे ब्रांड का प्राइमरी लोगो बना हुआ है ऑलरेडी, दैट इज़ द वर्ड मार्क लोगो एंड वी आर गोइंग टू मेक ब्रांड मार्क लोगो टुडे। तो थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक स्टाइल होने वाला है एंड ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का वीडियो है जो कि मैं रेगुलरली ऐसा वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वन। तो लेट मी शो यू व्हाट आई विल यूज़ टू ड्रॉ माई लोगो इन नोटबुक्स। और ये डॉटेड नोटबुक्स है जो कि फ्रॉम, these are not sponsored at all but they are from a really nice brand। आराम से आपको 200 से भी कम में मिल जाएगा। तो ये दोनों मेरे को 500 तक में पड़ गए थे, 400 में पड़ गए थे, 500 विद जो डिलीवरी का अमाउंट है वो। तो 200 में आपको आराम से एक नोटबुक मिल जाएगी। सो आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वील ड्रॉ सम आइडियाज इन दिस वन। Now let's start by making the logo in the Illustrator. First I am taking my original logo here, primary logo, जिसमें हम लोग we are going to delete rest of the letters. Now increase the size of the V and get started with the logo.
all three of them and go to object and then distribute them vertically so that the distance between all of them is equal. Now I'm drawing the shape of the brush for A with the pencil tool. Let's make one more copy to make the other one. Let's create some golden circles first. And we again draw with the pencil to create a perfect brush like A. So basically the idea behind this was to add a little creative element, to add something related to art. So I wanted to add a brush that also looks like an A. So yeah, as you can see, the V looks like pen tool already and the stroke looks like A, that is the shape of the brush. So yeah. So these are the two logos that I finalized, but I like the second one, so we are going with that. Now we are checking if it looks good with black and white and opposite. So this is how it looks on black and white, and I have created multiple colored versions of the logo, and as you can see, these both are opposite colors. I have also tried this on my other type of logos and multiple mock-ups. So yeah, this is how the logo looks on the mock-ups as well, and it's really like adding a creative element as well as looking professional. So yeah, that's what I like about this logo. Also, I'm checking on other mockups, so you can right click on whatever design you want, right click and click on mockup, so the mockups will appear and you can try multiple mockups. And this was the original mood board that I created before making my logo. That's the final logo. So I hope you guys like this kind of video. अगर आपको और लोगो डिज़ाइन के या फिर और कुछ डिज़ाइन का प्रोसेस देखना है तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और मेरा ब्रांड पेज भी है इंस्टाग्राम पे, तो उस पर भी आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो इफ़ यू गाइज हैव एनी रिक्वेस्ट फॉर योर लोगो डिज़ाइन और एनीथिंग लाइक दैट. अगर आपको कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ मेंशन डाउन इन द कमेंट्स.
and please like, share and subscribe to my channel. I know I am not very regular, but yeah, I'll try to be. Thank you so much for watching.